Hello everyone, welcome back to Sports Kabri. I'm Rahul and with me is Hiren from Curisari. Arnav is going to be joining us in a short while. Well, we're here to look ahead to the Asian Cup 2023 and we'll also discuss some transfers and talk a bit about the rumors doing the rounds in the ISL. Hiren, first of all, very happy new year to you. Happy new year to everybody here. India gearing up for this important Asian Cup. How does it look like right now? Hello to everyone and happy new year to you also, Rahul, and to everyone. And definitely excited starting with the AFC ASN Cup. I think it can't be better, to be honest, for Indian football with such a big tournament coming up. And नया साल भी है, सो लेट होप सो कि इस नए साल में एक क्या बोलते हैं कि एक स्टेप फर्दर हम इंडियन फुटबॉल में आगे बढ़े, दैट्स दी होप। एंड एक एक उम्मीद यहाँ पे जो मतलब पिछले आई थिंक 2023 में आई वुड से पॉजिटिव ईयर ही मैं मानूँगा उसको, उतना ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि पूरा नेगेटिव ईयर गया है। सो उस सेंस में मैं बोलूँगा कि इट्स गोइंग टू बी अ रियली रियली एक्साइटिंग ईयर, क्योंकि देयर आर ए वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैचेस, ISL and AFC ASEAN Cup. So I think, and also Olympic is also coming up. So that's also one of the uh, you can say कि tournament I am looking forward to. So let's hope so. This AFC ASEAN Cup will be फॉर इंडियन फुटबॉल टू एक रिमेंबर करने जैसा टूर्नामेंट रहे, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। नो Hmm. डाउट टफ ग्रुप एवरीथिंग इज देयर, बट आई थिंक इस काइंड ऑफ टूर्नामेंट की जहाँ पे एक मोमेंट भी अगर आप प्रोड्यूस करते हो, तो भी वो फैंस के दिमाग में मतलब छप जाता है कि यहाँ पे एक ऐसा, जैसे अभी भी लोग याद करते हो बहरीन वाला मैच 2019 का, रणोई हल्दर का वो जो पेनल्टी, तो दैट्स द थिंग विद द बिग टूर्नामेंट कि एक आध मोमेंट, एक आध गोल आपका, एक आध पेनल्टी, एक आध से कुछ भी हो। I think anything against Australia, Uzbekistan, Syria, I think will be remembered for long time. So let's hope so. ऐसे memories हमें 2024 में particularly एशियन कप में बने, and at the end of the 2024 और you can say कि beginning of 2025 हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे कि भाई 2024 में हमने इंडियन फुटबॉल में देखा। तो उम्मीद तो काफी ज्यादा है, लेकिन लेट्स सी किस तरह से इंडिया यहाँ पे परफॉर्म करती है। Yep. Hi, everyone in the chat. So let's start talking a little bit about India ahead of this Asian Cup. A player who is much debated in Indian circles is Udanta Singh, and Igor Simach has pointed out that Simach believes that Udanta is the quickest player in India, despite having Vikram Changte, Rahul KP, of course. Hiren, what's your take on Udanta? He's been a player who's not sort of done extremely well in the last 2 years, I'd say. Tapered off his career at BFC towards the end, and with FC Goa hasn't been he hasn't been the best player, or he hasn't shown you that he's what he was capable of, particularly. So what is your take on Udanta? आई थिंक जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने जो आंसर दिया, आई डोंट एग्री विद दैट आंसर, बिकॉज़ आई डोंट सी उदांता मतलब एफसी गोवा ने इस सीजन आईएसएल में 10 मैचेस में 16 गोल स्कोर किए हैं, 16 गोल मारे Hmm. हैं उन्होंने। आई डोंट थिंक सो कि उसमें से उनका 2 से मेबी 2-3 गोल में ही कंट्रीब्यूशन होगा, सेकंड असिस्ट आप मान सकते हो। अदर देन दैट आई डोंट सी हिज कंट्रीब्यूशन, टू बी ऑनेस्ट। देयर इज अ लॉट मच आई थिंक, और गेम प्ले भी, और आई I kind of disagree with also that thinking भाई उसका सबसे ज़्यादा पैसिव प्लेयर वो है। Hmm. आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ हमने कितनी बार स्ट्रगल करते हुए देखा है कि वो ईज़ी बॉल भी 1 वर्सेस 1 में लूज़ करता रहता है, एंड बीट करने की तो बात ही दूर है। सो आई थिंक इट्स नॉट द, यू कैन से कि जो आपने बोला है वो मतलब स्टेट्स से वो जस्टिफाई नहीं करते मेरे हिसाब से। अगर हम उदाहरण तक का आई थिंक स्टेट्स निकालना चाहिए हमें आई थिंक डिटेल में कि भाई कितना उन्होंने इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, कितना उसका फिगर रहा है, एंड उसके बाद ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ भाई किस तरह की उनकी गेम प्ले रही है। बट फॉर मी आई थिंक इज़ नॉट दैट कन्विंसिंग प्लेयर कि जो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है वो भी। एंड आई थिंक ये सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है, बेंगलुरु एफसी के लिए भी आपको पता ही होगा, लास्ट सीजन भी आप देखें कि वो ही इज़ नॉट द रेगुलर प्लेयर दिस टाइम, Yeah, absolutely. एट द मिनट्स, एंड आई Yeah. थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन कि उन्होंने शायद यहाँ पे क्लब स्विच भी किया। Hmm. Yeah, absolutely. Hiren, in amid these sort of circumstances, do you see Udanta making it to the final squad? सॉरी, उदांता मेकिंग इट टू द फाइनल स्कोर। Sorry. Udanta making it to the final squad, do you think would be justified in that sense? फॉर मी दैट ओनली वन प्लेयर सिलेक्शन जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चनेबल था। आई Hmm. मतलब आई काइंड ऑफ दीपक टांगरी की भी मेरे के लिए चलो ठीक है, मतलब आपने ले लिया कोई दिक्कत नहीं थी।
बट उदांता इसलिए भी जस्टिफाई नहीं करता क्योंकि एक आप मिडफील्डर शॉट जा रहे हो एंड एक एक्स्ट्रा विंगर के साथ आप जा रहे हो। सो दैट्स आल्सो काइंड ऑफ यू कैन से कि कॉन्ट्राडिक्ट योर प्लानिंग आई वुड से। तो इन दैट सेंस आल्सो मेरे लिए वो यहाँ पे कहीं न कहीं वो जो एक प्लेयर का सिलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा लगता है। नो डाउट अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है हम सबको और पर्टिकुलरली मेरे को अगर वो रॉन्ग प्रूव करता है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट अभी उसके Hmm. करंट फॉर्म के हिसाब से, करंट सारी चीज़ों के हिसाब से आई डोंट मतलब वो कॉन्फिडेंस के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि उतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट डाल पाएगा टू बी ऑनेस्ट। Interesting, interesting, interesting. Roshan, Hiren, another interesting player. रोशन डेफिनिटली आई थिंक वन ऑफ द बिग सरप्राइज जिसको यहाँ पे ड्रॉप आउट किया गया है। एंड आई Hmm. थिंक कहीं ना कहीं राहुल बेके का जो पिछले 2 महीने का परफॉर्मेंस है आई थिंक और रोशन का वो रेड कार्ड लेना, मैचेस मिस करना एंड आई थिंक बेंगलुरु एफसी के लिए उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस आप नहीं बोलेंगे। आई थिंक वो कहीं ना कहीं उसको उसकी जगह कॉस्ट कर गया। अगर वो थोड़े से भी अच्छे रिदम में होता आई थिंक उसका चांस बन सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली वो उसके अगेंस्ट चला गया एंड राहुल बेके ने सेंटर बैक पे भी अच्छा कर दिया, राइट बैक पे भी वो मुंबई सिटी के लिए अच्छा कर रहा है। सो दोनों तरफ से आपका वो प्लेयर अच्छा है। प्रीतम कोटाल भी एक एज़ अ एक्सपीरियंस प्लेयर आपको चाहिए था। सो वो भी यहाँ पे मल्टी यूटिलिटी वाला प्लेयर है। सो इस सेंस में रोशन सिंह बन सकता था उसका चांस मेरे हिसाब से भी। बट आई थिंक ये 2 रीज़न की वजह से वो भी यहाँ पे मिस आउट करने वाला है। Yeah, yeah. Another surprise inclusion I wanted to add, Ishan Pandita. Hiren, what is your take on it? Because I am surprised somebody who doesn't play regular club football. I don't think has to make it into the national team because it doesn't work out. You're not playing regularly. How are you going to come in and play a big tournament when you're not playing regular football for your club? आई थिंक उसमें सबसे मेन चीज़ रहेगी कि इगोर स्टिमिक ने अगर किस बेसिस पे डिसीजन बनाए, क्योंकि आपको इसमें दोनों साइड देखनी पड़ेगी कि एक मेरे पास ऐसा स्ट्राइकर है कि जो जिसको गेम टाइम कम मिल रहा है, ही इज़ लो ऑन कॉन्फिडेंस कमिंग अप फ्रॉम ए इंजरी से वो वापस आया। स्टार्टिंग के कुछ मैचेस केरला ब्लास्टर्स के लिए मिस भी किया था एंड उसके बाद उसको 15-20 मिनट एंड ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको ये ट्रस्ट करना है कि वो जो एक आपका आउट एंड आउट नंबर 9 पोचर टाइप जो प्लेयर है, वो आपके पास अभी वही है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है एज़ सच। क्योंकि आपका रहीम अली इंजरी जस्ट हुआ है एंड मनवीर राइट पे खेलता है। सुनील छेत्री आप आउट एंड आउट नंबर 9 पोचर नहीं बोल सकते। ही इज़ मोर अभी और ज़्यादा वो उन्होंने अपना गेम डेवलप कर लिया है। सो आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करना है कि मैं ये सारी चीज़ें साइड में रख दूँ कि उसका कॉन्फिडेंस भले ही लो हो, उसको गेम टाइम भले ही कम मिला हो, गोल भले ही उन्होंने स्कोर ना किया हो, लेकिन उसकी जो एबिलिटी, उसका जो रोल है, वो मेरे को ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मेरे जो गेम प्लान है एशियन कप में, उसमें ज़्यादा चाहिए। या फिर रादर देन ऐसा स्ट्राइकर चूज़ करूँ कि जो रेगुलर आईएसएल में खेल रहा है, हाई ऑन कॉन्फिडेंस है एंड कंट्रीब्यूशन दे रहा है, गोल भी मार रहा है, कियान नसीरी की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसा स्ट्राइकर चाहिए कि जो कि अ, आपका आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं है, लेकिन ही इज़ ये सारी चीज़ें उनकी अच्छी है। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे आपको देख के फिर डिसीजन बनाना था। ही गोज़ विद द प्लेयर कि जिसको एबिलिटीज़ के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया रादर देन हिज़ करंट फॉर्म का एंड Yeah. उसका गेम टाइम या फिर जो भी बोल लीजिए, आई थिंक उसके ऊपर ट्रस्ट किया है। बट मेरे हिसाब से स्ट्राइकर की एक ऐसी पोज़ीशन मेरे को लगती है कि जहाँ पे कॉन्फिडेंस एंड करंट फॉर्म मैटर मच अदर देन अदर पोज़ीशन टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हमने वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर के साथ भी ये होते हुए देखा है कि जब वो लो ऑन कॉन्फिडेंस होते हैं, तो ईज़ी से भी ईज़ी चांसेस उनके मिस होते हैं। Hmm. एंड स्ट्राइकर में मैं चाहूँगा कि हमेशा से आप ऐसा प्लेयर लेके जाओ कि हाई ऑन कॉन्फिडेंस हो, कि जो लगातार क्लब लेवल पे अच्छा करते आ रहा हो, तो उसका जो चांसेस है वो क्रिएट करने का, कन्वर्जन रेट का पर्टिकुलरली ज़्यादा रहेगा। इंडिया के लिए पर्टिकुलरली अगर आप एशियन कप में देखें, वो खुद इगोर स्टिमिक ने भी एक्सेप्ट किया है कि हमें चांसेस कम ही मिलने वाले हैं। हम अगर एक्सपेक्ट करें कि ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान के सामने हमें बार-बार चांस मिलेंगे, आई थिंक मे बी गेम में 3, 4, 5 चांस आपको हाफ चांस मिला के भी आपको मिल जाएँगे। तो उसमें आई थिंक आप एक ऐसा प्लेयर चाहोगे बॉक्स के अंदर कि जिसका कॉन्फिडेंस हाई हो एंड जो जिसके अंडर द बेल्ट यहाँ पे कुछ गोल असिस्ट हो, ताकि उसका जो फिनिशिंग का चांसेस है वो ज़्यादा रहे। बट लेट्स सी यहाँ पे ईशान पंडित, लेट होप सो कि यहाँ पे फाइनली उसको चांस मिला है तो उसको प्रूव करें, क्योंकि टैलेंट तो यहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी प्लेयरों के साथ फुटबॉल में होता है, लेकिन उसको किस तरह से आप पिच के ऊपर दिखाते हो एंड उसको कितना उससे कितना ज़्यादा आपकी टीम को हेल्प होता है, दैट मैटर द मोस्ट रादर देन कि भाई पोटेंशियल है इस प्लेयर में, इस प्लेयर में पोटेंशियल है। बट पोटेंशियल से कुछ नहीं होता। यू हैड नीड टू यू कैन से कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको गोल असिस्ट में, तभी जाके पता चलेगा। सो लेट्स सी Hmm. यहाँ पे ईशान पंडिता मेरे हिसाब से कियान नसीरी बन सकते थे। आई थिंक वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर है जो कि करंटली इंडिया के पास नहीं है। एंड बट अनफॉर्चुनेटली ईशान पंडित के साथ यहाँ पे एक गोष्ट में गए हैं। सो लेट होप सो जो मूव है
वो यहाँ पे राइट वे में यहाँ पे क्लिक करें। Yeah. A couple of interesting takes on Ishant Pandita. Igor says he's only played not even 45 minutes in 12 matches for Kerala Blasters. Anurag goes the other way. He's saying he's a prospect and these kind of tournaments will help his confidence. It's interesting. Um, and there are a couple of takes on Roshan. I can see in the chat Parmeshwar saying that he's had a decent season, not as bad as some people are making it out to be. Again, Roshan has had a good season, is what mindset is saying under Steam Match. You just can't get recognition, is what he thinks, even by being a good player. Do we have good cover, Hiren? According to you, at right back, if Pujari doesn't do well, is Pritham Kotal the man to step in? आई थिंक प्रीतम कोटाल भी है, राहुल बेके भी अच्छा कर सकता है। नो Yeah. डाउट दोनों आपको ऑफेंसिवली उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे क्योंकि दोनों की जो ट्रैक बैक एबिलिटी है, उतनी ज़्यादा आप नहीं बोलेंगे अभी कि अप डाउन जो आपके मॉडर्न फुल बैक से आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको ओवरलैप करके दे। आई थिंक वो आपको राहुल बेके एंड प्रीतम कोटाल से उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक इन्वर्टेड राइट बैक की तरह वो ज़्यादा मेरे हिसाब से रोल प्ले कर सकते हैं एंड आपका डिफेंसिव मिडफील्डर है, उसके साथ थोड़ा-सा क्या बोलते हैं कि सपोर्टिंग रोल में थ्रू पासेस हमने राहुल बेके के देखे हैं मुंबई सिटी के लिए काफ़ी बेहतरीन निकालते हैं वो। सो लॉन्ग बॉल्स, थ्रू पासेस इस तरह के बॉल्स आप उनसे बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो रादर देन क्रॉसिंग या फिर ओवरलैपिंग में आपके विंगर के साथ जो भी राइट विंगर खेल रहा हो, आई थिंक उसके साथ। तो उस सेंस में एंड आई थिंक थोड़ा-सा डीप ड्रॉप होके भी यहाँ पे डिफेंड अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो आई थिंक राहुल बेके भी अच्छे फॉर्म में आ रहा है तो दैट्स अ गुड गुड पार्ट एंड एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। प्रीतम कोटाल तो मैं ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट राइट बैक पे। आई थिंक अगर उसको खिलाना है तो राइट सेंटर बैक पे ही अगर आप 3 एट द बैक कन्वर्ट करते हो, देन एंड देन ओनली ही शुड बी प्लेइंग अदरवाइज़ तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि उसको हमें एज़ अ राइट बैक प्रॉपर यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। अगर आपको डिफेंसिव ही खेलना है, देन यू कैन गो विथ द हिम आल्सो एज़ अ राइट बैक कि आप डिफेंसिव खेल रहे हो तो। बट अगर आपको थोड़ा-सा भी ऑफेंसिव रोल चाहिए आपके उससे, तो देन आई थिंक प्रीतम कोटाल विल बी नॉट द माय फर्स्ट चॉइस। Okay, guys, everybody, let's sort of move on to discussing the midfield. Hiren, interesting midfield options. What do you think the coach will go with in midfield eventually when we come to the game? Got a couple of options. Anirudh Thapa, you've got Deepak Tangri has made the squad. Of course, Brandon Fernandez, Absal Abdul Samash, Suresh. So, what is Apuya? So, what does your midfield look like? आई थिंक फर्स्ट 2 मैचेस में तो सहल अभी तो बाहर है, सो उसको तो साइड में रख देते हैं, ही विल नॉट प्ले। सो आई थिंक नंबर 10 के साथ अगर आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया के सामने, देन आई थिंक ब्रेंडन एंड थापा इज़ योर ऑप्शन। मेबी नोरेम माइल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो, लिस्टन ऑन द वाइड एंड नोरेम एज़ अ नंबर 10 बट आई डोंट सी दैट ऑप्शन यू कैन से कि ज़्यादा। आई थिंक थापा मेरे को लगता है कि फर्स्ट चॉइस रहेंगे एंड ब्रेंडन आई थिंक एज़ अ सब्स्टिट्यूशन आते हुए दिख सकते हैं एंड सुरेश एंड अपुया या फिर अपुया एंड टेंगरी भी देख सकते हैं, दीपक टांगरी क्योंकि एक आपको फिजिकलिटी वाला प्लेयर चाहिए क्योंकि सुरेश एंड अपुया के साथ क्या होगा कि आपको एक हाइट एडवांटेज कम हो जाएगा दोनों का। सुरेश के पास फिजिकलिटी अच्छी है लेकिन आई थिंक मिडफील्ड में आपको सेकंड बॉल और वो सारी चीज़ें भी विन करनी पड़ेगी टू यू कैन से कि स्टॉप द काउंटर अटैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आल्सो एंड गेम को थोड़ा-सा आपको ब्रेक भी करना पड़ेगा। सो मेबी दीपक एंड अपुया भी स्टार्ट कर सकते हैं, यू नेवर नो एंड या फिर Hmm. सुरेश एंड अपुया तो है फर्स्ट चॉइस। सो मिडफील्ड में आई थिंक उतने प्लेयर ही नहीं है आपके पास, आप कितने प्लेयर लेके गए हो? 6 प्लेयर ही लेके गए हो। Hmm. सो ज़्यादा उसमें से भी सहल तो इंजर्ड है, 5 ही प्लेयर है, आप 5 मिडफील्डर ही हैं। वो तो एक ही मैच में सारे यूटिलाइज़ हो सकते हैं। आपके 3 स्टार्ट करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूशन होके आएँगे। सो True. आई थिंक इट इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड सबसे ज़्यादा मेरे को डर भी वहीं पे है कि मिडफील्ड अगर हमारी क्लिक नहीं की, तो चाहे कितना भी आप डिफेंस कितना भी आप वो कर लें, कुछ नहीं होगा। यू विल बी एक्सपोज्ड, सिंपल एज़ दैट। No, आपको yeah, डिफेंस को प्लेयर नहीं करेगा। I think the question again, a lot of people are discussing it in the chat. Brandon or Thapa, would you go with the number 10 in the first game? Would you play Brandon? I think in first game I would go with the 4-4-2 and I will not play number 10. I think in first match or against Australia I will go with Thapa, Suresh and Apuya, or maybe you can say ki Thapa, Tangri and Apuya. This will be my midfield against maybe Suresh and Apuya. I will be the first choice obviously. Thapa, Suresh and Apuya. I would go with that midfield. Yeah. Anurag makes a good point here because you don't have Roshan for set pieces. Will we have to play Brandon? Because then who sits on set pieces in this team if you don't have. थापा ने आई थिंक थ्रू आउट दिस ईयर 2023 यहाँ पे नेशनल टीम के लिए क्रॉसेस भी सॉरी कॉर्नर भी उन्होंने लिए हैं, सेट पीसेस भी उन्होंने लिए हैं। सो
आप बोलेंगे कि उतना ज़्यादा मतलब उसका इनकंसिस्टेंट थोड़ा-सा रहा है, कुछ डिलीवरीज़ उन्होंने अच्छी डाली है, कुछ डिलीवरीज़ यहाँ पे एवरेज सी है, बट आई थिंक थापा देन विल बी द चॉइस फॉर दैट सेट पीसेस। Absolutely. Suresh Apoya have played together since ages. Was on show as well when India's last couple of outings. They're doing well, and it looks likely that they could start beside one ये another. ये ये And भी ये भी ये भी ये भी फैक्टर यहाँ पे क्या बोलते हैं प्लग इन करेगा क्योंकि आपका केमिस्ट्री प्लेयर के साथ अंडरस्टैंडिंग कितना है, वो भी ये बड़ी टीमों के सामने जब खेलते हो देयर देयर विल बी यू कैन से कि उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा मैटर भी करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से आपकी स्पेस देखिए ऑस्ट्रेलिया के सामने भी नीड टू क्लोज डाउन स्पेसेस एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर आप जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होके खेलोगे एंड उनको हाफ स्पेसेस में आप क्या बोलते हैं कि बिल्कुल ही मौका नहीं दोगे, देन आई थिंक योर चांसेस विल मिनट बाय मिनट आपके चांसेस बढ़ते जाएँगे कि आप गेम को और भी ज़्यादा डीप लेके जा सकते हो। सो yeah, आई थिंक मिडफील्ड नीड्स टू बी वेरी वेरी अलर्ट टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक मैंने बोला ना कि अगर आपकी डिफेंस कितना भी कॉम्पैक्ट हो जाए, अगर आपकी मिडफील्ड बॉल होल्ड नहीं कर पा रही है और उसको वो नहीं कर पा रही है, देन योर डिफेंस विल इवेंचुअली विल बी एक्सपोज्ड या फिर वो खुलेगा, ओपन होगा ही। yeah. Hiren, were happy with the choices up front, or do you think you would have had somebody else? So let's just run through the forwards. You've got Yeah. Listen Kolasa who can play wide, Navare Mahesh Singh who can play wide. You've got Udanta who can play wide. Then you've got Rahul KP, Vikram Pratap. Then the guys who can play up top, Sunil Chetri, Ishan Pandita, Manveer Singh. So these are your options largely. Happy with them? आई थिंक आई एम हैप्पी ओनली मे बी मैंने जैसे बोला कियान नसरी में भी ऐड हो सकता था बट नो प्रॉब्लम। आई थिंक ओवरऑल आई एम हैप्पी जो बेस्ट आपके पास ऑप्शन अभी अवेलेबल थे फिट आई थिंक उसी को चूज़ किया गया है। लिस्टन कोलासो, मनवीर आपका इस आपने जैसे बोला कि नोरेम महेश विक्रम प्रताप सिंह की एंट्री से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। बंदे ने पिछले 2 साल में कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस दिए जब भी मौका मिला है। ही डिजर्व टू बी कॉल अप। सो दैट्स अ गुड कॉल अप। राहुल केपी का मैं एक थोड़ा-सा जो फिनिशिंग है वो एंड फाइनल था डिसीजन मेकिंग वो थोड़ा-सा बेटर उससे चाहता हूँ बिकॉज़ अदरवाइज़ ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। हमने देखा है कैलम नासर के लिए भी वो उस सिचुएशन में तो आ जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से फिर वो जो उसका डिसीजन हो या फिर उसकी शॉट टेकिंग एबिलिटी है वो कहीं न कहीं यहाँ पे उस उसके जो चांसेस है गोल को कन्वर्ट करने के वो कम कर देता है। तो आई थिंक इन दैट सेंस राहुल केपी हैज़ आल्सो पेस है बंदे के पास एवरीथिंग ही हैज़ बट आई थिंक ये अगर उसका एरिया क्या बोलते हैं कि गेम का जो एस्पेक्ट है वो बढ़ जाता है, देन आई थिंक ही कैन बी अ गुड गुड ऑप्शन फॉर द इंडिया। Yep, yep. Very interesting. What is Manveer's role, Hiren? Because he's been an interesting player, can play out wide, and we've seen him being used in that position by the coach. Do you think there's a chance that he could do that in these first few games? I think so. I think so. He will be really really crucial in those particularly I think against Australia and Uzbekistan. I am seeing because I want to see against Australia. If you go with the 4-4-2, then Sunil and Manvir will be perfect choice for me to go as a front, and I think that make lots of sense. आपका भी set pieces में आपको एक height advantage वाला player मिलेगा and is good with that. And दोनों रेल आपका खेल सकते हैं थोड़ा सा वाइड भी जा सकता है एंड ऑल्सो आपका एक एक क्या बोलते हैं कि नंबर 9 का भी रोल प्ले कर सकता है। तो इन दैट सेंस आई थिंक इट विल बी गुड टू सी। Yeah, Anurag completely agreeing. He's saying he would start with Manveer because of the physical aspect. Tubing asks a very interesting question because India is going to have to really make the most of their opportunities, corners, set pieces, all of these things. So, what is our threat from set pieces, Irene? What do you think? Do you think we have much of a threat from set piece situations? आई थिंक मैंने जब ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस भी थे, कतार के सामने पर्टिकुलरली तब भी मैंने बोला था कि इंडिया को एक चीज़ अगर कतार के सामने कुछ भी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना था, देन यू नीड टू बी ऑन पॉइंट ऑन सेट पीसेस बट अनफॉर्चुनेटली हमने वहीं पे गोल कंसीड किया। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, उज़्बेकिस्तान, सीरिया के सामने भी और इगो स्टीविन ने भी कल बोला है कि द फोकस शुड बी ऑन द सेट पीसेस एंड इसीलिए यहाँ पे ट्रेवर सिंक्लेयर को लाया भी गया है, पर्टिकुलरली Yeah, उस उसको यहाँ पे बेटर करने के लिए। सो लेट्स सी बट आई थिंक इट विल बी रियली रियली क्रूशियल क्योंकि सेट पीसेस में आपके पास हाइट एडवांटेज वाले उतने ज़्यादा प्लेयर नहीं है। सो डेफिनिटली सामने वाली टीम का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि गेम प्लान में रहेगा कि हम यहाँ पे सेट पीसेस से भी गोल स्कोर कर सकते हैं। सो आई थिंक इंडिया नीड टू बी रियली रियली सॉलिड ऑन देयर डिफेंसिव एस्पेक्ट। yeah, yeah. Here, interesting. We've run through most of the squad. An important position we haven't, important position, of course, is the goalkeeping position. Gurpreet or Amrinder or Vishal Ketan with a shout. What do you think? Is it straightforward, Gurpreet?
Against Australia, Gurpreet Singh Sandhu. Against Uzbekistan, it will be Amrinder. And in last match against Syria, again, it will be Gurpreet Singh Sandhu. Okay, interesting, interesting. Why do you say so, Hiren? बस वो उसका पैटर्न ही है ईगोस्टिमिक का, एक मैच में इसको, एक मैच के इसको, Okay, सिंपल. okay, fair enough. Hi, Anava. We're just discussing the Indian squad and our potential lineup, basically, pretty much. Couple of interesting calls that we've made. Hiren says there could be a chance that the keepers could be rotated in these games. Do you think that's a possibility? Potentially yes, potentially no. I think it depends on how Gurpreet does in the first game. I think that's going to be Hmm. crucial. If Gurpreet puts in a good shift in the first game, he might stick with Gurpreet in the first game, and so therefore it's an interesting sort of question for Steamach to sort of analyze. How do I strengthen my team? How do I strengthen my keepers going into the tournament? And that's going to be one of the big questions I think for him generally. Is like, how do I set up my team? What do I play? Do I play my standard 4-2-3-1? Do I want to try out a potential three-man backline, potentially with Sandesh, with Rahul Deke, and with Pritham Kota? You know, that might be maybe a 5-4-1. That's going to be the first question that he needs to answer, because I think there's a lot of learnings from how India played against Qatar, and on the other side, I think there are even more learnings from how the way Bangladesh tried to play against Australia. So therefore, you know, these are the things I think you need to observe, need to understand, and then set up your team very clearly, and how he's going to do it or not. What about this one? Anava? सॉरी, There's another. सॉरी, Sorry, yeah, Hiren. यस यस, इसी का मैं बोल रहा था कि अनुराग भाई Ah, का जो क्वेश्चन है कि यस भाई, थापा प्लेड मोर मिनट्स, आई थिंक दैट्स व्हाई ही लुक्स इन लास्ट कपल ऑफ मैचेस, ही लुक्स एग्जॉस्टेड. मतलब वो बंदे की बैटरी ड्रेन हो गई है, ऐसा लग रहा था, और कुछ इम्पैक्टिव उससे नहीं आ रहा था थापा से. सो थापा प्लेड मोर मिनट्स देन ब्रेंडन. ब्रेंडन, आई थिंक अगर आप थोड़ा सा ऑफेंसिव जा रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद द ब्रेंडन. बट ब्रेंडन के साथ भी आपका वही है कि ही कांट, मतलब आप 90 मिनट तो आप नहीं खेलो, उसके साथ जा सकते हो. यू नीड टू बिनेंगे सब्स्टिट्यूशन. तो आई थिंक थोड़ा-सा अगर आपको डिफेंसिव जाना है, फर्स्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की, देन आई थिंक थापा वुड बी अ गुड ऑप्शन कि जो आपका बॉक्स टू बॉक्स रोल भी प्ले कर लेगा, थोड़ा-सा अटैकिंग डिफेंसिव भी कर लेगा. तो उस सेंस में मैं बोल रहा था. अरुणा सर, आपने जैसे बोला कि गुरप्रीत सिंह संधू का फर्स्ट मैच में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो कुवैत के सामने भी 1-0 उन्होंने क्लीन शीट रखी थी, एंड कतार के सामने अमरिंदर पाजिया में दिख गए थे. सो कोई नहीं, आई थिंक रोटेशन ही होगा सर, मेरे को तो सच में लग रहा है. आई थिंक इट विल बी रोटेशन, एक मैच ये Let's see, खेलेगा, एक मैच let's वो see if he does it or if he's learned his lesson from the Qatar game. yeah. That is I the point, personally. because against you win against Kuwait. Um, the result at the end was more important than the way we played, I think, at the end of the day. But I think that team was settled somewhat, and you disrupted that settling of the team. That's the question that he'll have to find, because this is you're playing two very strong teams within 5 days. This is a level of football which Indian footballers rarely play, and then playing twice in 5 days. That's the test. That's where we need to really be on point in our selection in regard to starting 11 and a substitute as well. So therefore, the question is, if Steamach considers of going to a three-man back line and add the two wing backs to it, so make it five. And on the other side, what makes it interesting is, does he consider of blocking off the middle, which means that rather than us talking about who's going to be the creative element, does he put, besides Suresh and besides Apuya, does he put in, let's say, Deepak Tangri? And the task is then on Apuya to be creative. And Apuya is also, what a lot of people forget, he's a guy who can take corners, free kicks. Suresh can do that potentially as well. So we do have options. We still have, our wingers. We still have Sunil. So that would take care of itself. The question is, for us at the start of the Asian Cup, how good is our defensive backline? Akash is saying even if Gurpreet plays his best football, there's no guarantee under Igor. But I mean, me personally, I would love to see the same keeper used for all games, be it whoever it is. I hope he knows his number one and doesn't disrupt things like Arnav just said. So I hope he knows his number one, whoever it is, be it Gurpreet or Amrinder. And another contentious
sort of topic that we've had is Udanta Singh, and Hiren and I just spoke about it. Aruna, I'll just come to you. What is your take on Udanta's inclusion in the squad? What sort of a role does he play for this Indian team in the Asian Cup? See, Rahul, we spoke about it the other day. I think for Okay. most people, it is not understandable how Udanta makes the cut ahead of other players. Mm. Now, Steemach has tried to defend that decision and say a few things which are positive in regard to Udanta. But the things that he's saying about Udanta, I don't know if he's talking about Udanta 2023 or if he's talking about Udanta 2018 or 2019. I think that's the problem. And my question still is, we've taken so many wingers along, our defensive midfield is a little exposed. And our midfield is our midfield is our issue, because Sahal is going to be missing at least one match, if not two. So Sahal at the moment to me is a passenger. I hope Sahal gets fit, because we could need a fit Sahal. But the point is also, Sahal will come into whenever he is called upon without football for 4 or 5 weeks. Yeah. So I think that should be questioned, saying like, it's different than taking 2011 Bob took Baching Bhutia along to the tournament. It was the end of a cycle. It was a historic tournament, and Baichung's influence in and around the dressing room that there is. So the question here is, does that make sense? So there are 3-4 decisions where we can talk about it. Mohammad Yasir, for example. Why is Asana not there? So therefore, yeah, he has to answer those questions. And again, no one is asking the questions. That's where I guess the problem is. So let's see. जो पूछा सर, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है उनका भी आधा ही लिया गया है. जो टफ पार्ट था उसमें से उसको भी कट डाउन कर दिया गया है. सो दैट्स द थिंग. विष्णुराज भाई का गुड क्वेश्चन है कि क्रेग गुडियन इज द बिगेस्ट थ्रेट इन द लेफ्ट विंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया हु कैन स्टॉप हिज फिजिकलिटी एंड टेक्निकलिटी. निखिल, प्रीतम और चुमनुंगना. I would go honestly, knowing a little bit about Igor Stimac, I think Nikhil is the first choice. But on the other side, looking at the last few weeks, Pritam Kotal does give me that vibe, is he'll put in a fight. And the question is Manvir fit enough to play, to put up that fight, or does he go with Changte? So therefore, yeah, I think there are a lot of ifs and buts. I think for me, right side would be against Australia. I'm expecting it would be Manvir and Nikhil. Yeah. I don't know. I mean, Manvir is another interesting one. Where do you stand on him starting games for India? My question is, with all of these guys who've had their injuries in the last 2-3 weeks, what is the level of fitness when the Asian Cup starts? And that's what I'm saying, passengers. It doesn't matter who it is. You've mentioned Anirudh Thapa. We've spoken about Anirudh Thapa, that Thapa looked tired. So does Anirudh Thapa get that time in the next 2 weeks to physically get back into shape again? Brandon is coming off of a long injury. Played very well against Mohun Bagan, but was honestly struggling against Northeast United. Changte, first half against Chennai wasn't the best. Second half, with the goal and with other crosses, passes he played, much better. So we've got multiple of these players who are in this situation. Even Apuya didn't look too good in the first half, looked much better in the second half. Sandesh Jingan was once in a while tested against Northeast, but not really tested. Again, have just to go up against other guys. Pritam Kotal had his moments in Kolkata, but also sometimes had his problems with Kian Nasiri. So we can go through all of the players, halves and up. Where does Sunil stand at the moment? I don't know where Sunil stands at the moment, because Sunil has been little hard, but maybe he's been a little bit of a passenger at BFC, right? He's not been able to create that magic that we need Sunil to create for India. So therefore, let's see where we. It's an interesting one. So therefore, yeah, that's the
doesn't make sense, right? So Yeah, yeah. fit players, whoever is 100% fit, needs to go onto that field, because against Australia, even a player who's 90% fit, 90% of our fit is somewhat of an unfit in Australian standards. Yeah. But yeah, guys, pretty much we've run through the entire squad and previewed the Indian side and how they could set up when they play Australia in a couple of weeks' time. Now, of course, the ISL, a lot of rumors, transfer news, exciting stuff happening that people are discussing different things. Srini Deccan taking over Hyderabad potentially is that something that you guys have heard of? मैंने तो नहीं कहीं पे सुना है. Sorry, which Okay. one? Which one? Sorry. Srini taking over Hyderabad potentially. It is one of the many rumors which is around Hyderabad. I think the whole Hyderabad scenario is yeah, it's very, very disturbing, to say the least. We've Hmm. always talked about the players and the coaches, but I think and they are on very, very good salaries, but there are other people in the background who are on much, much smaller salaries, um, who are fighting to make ends meet. I know that certain players have helped certain staff with money to actually survive, and the ISL has helped Hyderabad with certain financial help. Um, the question is, how are you going to end this? Is this going to end now because you suddenly don't have a squad? That's one. And on the other side, or does it end because the owners realizes they are unable to get in money? This has been a problem now for over 2 years, and it's a huge challenge, to keep the whole club alive. Um, and let's see if Srini Deccan as an entity have the money, have built the infrastructure, and yeah, and it's somewhat similar to what Roundgrass Punjab is, or what potentially Gokulam Kerala could be for the ISL. But would they take it over? I don't know, because the question is, there's a lot of pending debt and all that stuff. Does it make sense for Hmm. them at all to do that, or does it make sense for them to actually get naturally promoted? So there must be talks going on in the background in some sort of form of way, or Hyderabad has reached out to they can. Um, but again, that's going to be. And Connor Nesta, yes, Connor Nesta just officially announced he's gone, but he's left for a while. He's not been officially the head coach. He was just there for the sake of being there, I think, in the end. So therefore, yeah, that's the challenge, I guess, which Yeah. which Hyderabad have, and we were talking about Jamshedpur the other day. Somewhat similar also is that how these teams can disintegrate, so to say, in less than 2 years, right? 2 years ago, Jamshedpur won the Shield, Hyderabad won the league, and now Jamshedpur just have changed their manager, are close to the bottom, and Hyderabad is rock bottom. That is very, very sad to see, and very, very sad to see. Yep, yep. Hiren, anything that you've heard of? Any rumors, नहीं नहीं players बस that यही जो सर ने बोला आई थिंक सेम चीज रिगार्डिंग हैदराबाद एफसी एंड सिचुएशन इज getting much worse by day by day. So let's see. I think सर ने जैसे बोला अगर फाइनेंशियल एड आती है then and then only can situation will turn around, or otherwise the last option is to be shut down. So I think अभी 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 तो ये दिख रहा है कि मल्टीपल इंडियन प्लेयर आल्सो आस्क फॉर टू टर्मिनेट देयर कॉन्ट्रैक्ट टू हैदराबाद एफसी एंड आई थिंक जनवरी ट्रांसफर विंडो में साना सिंह का जैसे नाम निकल के आ रहा है कि मोहन बगान बेंगलुरु एफसी आपका क्लब भी इंटरेस्टेड है इफ यू नीड ए इंडियन सेंटर बैक जो आपने समर में गलती की थी। तो उसको कहीं न कहीं आप रेक्टिफाई किया है यहाँ पे बेंगलुरु एफसी ने, तो वो भी यहाँ पे उनको ट्राई कर रहे हैं। मोहम्मद यासिर का मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसके लिए भी क्लब डेफिनिटली ट्राई करेंगे। देयर इज़ निखिल पुजारी, हितेश शर्मा के लिए ईस्ट बंगाल का र्यूमर आ रहा था। तो देयर आर कपल ऑफ इंडियन प्लेयर्स कि जिसके साथ यहाँ पे काफ़ी सारे बाकी जो है क्लब्स है, वो यहाँ पे मे बी कॉन्टैक्ट में हो गए एंड जानुअरी ट्रांसफर विंडो में अगर यहाँ पे बंच ऑफ यू कैन से कि इंडियन प्लेयर्स, इंडियन कंटिजेंट लीव्स फ्रॉम द हैदराबाद एफसी, then I think Enroad will be the shutdown. I think then hmm, there is a no coming back. yeah, okay, fair enough. Fair enough. Another Hiren, guys, just wanted to quickly touch upon Khalid Jamil as well. If
He's been appointed as head coach till the end of the season by Jamshedpur. So Arnava, what do you make of this decision? I would think for Khalid, it's an opportunity to showcase himself once more in the ISL. Um, but on the other side, you can ask about the intent of Jamshedpur FC. Are you just wanting to finish off the season? What's your intent? You looked Jamshedpur looked decent towards the start of the season, but there's supposedly also a lot of internal problems at the club, at the franchise. I don't know if the Tatas are really looking into things. And yeah, let's see if Khalid Khalid Bhai can turn it around, or if Jamshedpur sort of finish 11th or 12th, 11th, 10th, maybe 9th in that region. You know, the team has a certain level of potential, but there is some rumors also that certain foreigners might also leave. एक चीज जो सॉरी टू इंटरप्ट राहुल, एक चीज इससे प्रूव होती है कि कितना जो आपका बिहाइंड द सीन जो एनवायरनमेंट है वो कितना मैटर करता है टीम की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे। दोनों क्लब ले लीजिए, जमशेदपुर में भी आप देखिए कोच का जिस तरह से मैनेजमेंट के साथ वो टसल चल रहा था, एंड वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि टीम की परफॉर्मेंस में अफेक्ट कर रहा था। एंड सेम गोज फॉर द हैदराबाद एफसी की जो आपका मैनेजमेंट का इश्यू है या फिर जो फाइनेंशियल इश्यू है, वो कहीं न कहीं आपकी ऑन फील्ड आप कितना भी चाहे, नहीं तो अब देखिए सर ने जैसे बोला कि दोनों ही टीम के पास प्लेयर भी अच्छे हैं, एंड परफॉर्मेंस भी ऐसी आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो वो एक आई थिंक इंटेंट, वो एक एक जो पॉजिटिवनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है किसी भी क्लब में, कि आपका जो एटमॉस्फियर है ड्रेसिंग रूम का हो या फिर आई थिंक मैनेजमेंट के साथ हो, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो दोनों क्लब के पास अभी एट द मोमेंट तो नहीं दिख रहा है। सो लेट्स सी खालिद जमील क्या उसको चेंज कर पाते हैं। आई थिंक वो भी एक 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 चीज़ रहेगा, सिर्फ ऑन फील्ड परफॉर्मेंस नहीं होगा। आई थिंक किस तरह से ये जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसमें किस तरह से टीम को यहाँ पे एज़ अ ग्रुप किस तरह से, आई थिंक परफेक्ट एग्जांपल है मनोल मार्केस की। देखिए हैदराबाद एफसी में सर ने जैसे बोला कि ये प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं कि अभी से चल रहा है, पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन लास्ट सीज़न मनोलो मार्केस ने टीम को बॉन्ड ओ क्या बोलते हैं कि एकजुट करके रखा एंड टीम को प्लेऑफ में ले गए, सेमीफाइनल खेले। ये तो आई थिंक खालिद जमील एंड जो आई थिंक हैदराबाद एफसी के भी कोच है, उनके लिए भी यही चैलेंज है कि किस तरह से वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। Hmm. Guys, But 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 there's one big difference. Hyderabad has known public issues in regard to finance. फाइनल Jamshedpur FC is owned by the Tata Group, one of the richest conglomerates in India, and that to me is something. You know, with the Tatas, it's always been a question. They've been running the Tata Football Academy since the 80s. They won the second division in 2005, if I'm not wrong. Could have gotten promoted to the NFL at the time. Didn't do that. Stayed in the second division. Have not really invested as much as they could have over the last sort of 4 or 5 years. You know, since they've been in the ISL. And now are in a situation of where you say, okay, the team has potential, but something is lacking. लकी And you had a good coach, and the coach highlighted where the problems are. You didn't like what the coach highlighted. At least the हाइलाइट club एग्जैक्ट management didn't like. So this is something where you say is that, okay, where's your intent? You see the intent. Sanjeev Goenka is spending the money. The right or wrong, different question, but he's spending money on it. City Football Group with Mumbai City has done that. Even this season, if you see Goa, if you see Odisha, have spent money to put a quality team together. And that's the question that needs to be asked to the Tatas. And you know, Tatas sometimes feel like a Sarkari office. Doesn't work, you know, because Jamshedpur has so much of potential. You are having more than 20,000 people coming to your home games. Most of the teams in the ISL would kill for such a number. And this is sort of disservice to your very, very loyal fans, where I'm even hearing, you know, a lot of women going, a lot of children going to watch their matches. This is disservice to these people. So I think they deserve better. Yeah, fair enough. Akash asks about Mohan Bagan. They're looking for a new striker. Basundhara Kings player is what he says. When they actually need a good defensive midfielder. Any truth in these rumors, guys?
I think I will say for Bengal club. I think when they made official, then and then only we can believe. Other than that, it's just rumor ही मैं तो मानता हूँ कि पास्ट एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि जब तक वो ऑफिशियल नहीं हो जाता तब तक लास्ट मिनट तक उसका डील चेंज हो सकता है. यू नेवर नो विद द मोहन बगान ईस्ट बंगाल लास्ट मोमेंट तक आपको पता नहीं चलता कि भाई क्या जो क्लब ऑफिशियल से वो क्या उसके दिमाग में कभी घुस जाए. यू नेवर नो भाई. तो अगर होता है देन मतलब आपकी बात सही है कि डिफेंसिव मिडफील्डर उनको जाना चाहिए बट जो जा रहे हैं फॉरवर्ड के लिए अरमांदो सादिक के रिप्लेसमेंट के लिए. सो लेट्स सी. एंड द बॉयज पे बोल रहे कि इंडिया कोई फ्रेंडली करवा दो यार. खेल रहा है ना इंडिया अपने आप के साथ ही खेल रहा है भाई. इंटर स्क्वाड खेलेगा साथ को. उसमें से cheeky उसमें भी 11-11 line. नहीं होंगे, 2-3 तो इंजर्ड ही रहेंगे. तो इगोस्टेमिक भी सेंटर में खेल लेगा. वो ट्रेवर सिंक्लेयर राइट विंगर खेल लेगा, तब जाके स्क्वाड खत्म पूरी होगी. वो गावली सेंटर बैक खेलेगा तब जाके. Hmm. Yeah. Guys, anything on the telecast for the Asian Cup? स्पॉट 18. Sports 18. You did? Says it. यस यस. Sports 18. Sui has asked. So that's your answer. Anything else, guys? Transfer wise, transfer rumors. Interesting that you're hearing. Lots of foreign players lives in the I League. Multiple. Hmm. Well, what do काफी you what सारे do you प्लेयरों think ने is लीव down? किया. What do you think is down ये here? मेरे मेरे को सर ये समझ में नहीं आता. आई लीग में तो ट्रांसफर वांसफर हो जाते हैं. इसका तो कुछ मतलब ऐसा सच कोई अपडेट या फिर ऐसा कोई इन लोगों ने प्लेटफॉर्म नहीं बना के रखा कि जहाँ पे एकदम से वो मिले. मतलब ये तो अंदर अंदर ही वो हो जाता है कि हाँ ये हो गया हो गया हो गया. Oh, well, that's normal in football, no? I mean, players come, players go. And then in the I League, you have, of course, still this old mentality of hire and fire. And also, you have a lot of these African players who go from one club to another. You have a big issue at the moment. I don't know if you guys have heard it in Kolkata with the teams playing in these informal competitions. Neroka, the whole team played a tournament semi-final. I mean, this is फाइनल. I don't know. Normally that whole team should be वो banned from doing those kind हाँ of सर things. वो Abhishek, सॉरी टू इंटरप्ट. हाँ, वो नहीं वो मैंने जब वो अभी रिसेंटली वो स्टीव हर्बर्ट से बात की थी तो उसने भी वही किया क्या कि ये फीफा के रूल के अगेंस्ट है कि यू कांट प्ले दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट. एंड उन्होंने रिसेंटली भी बोला है कि यहाँ पे सारे लड़के अभी खेप खेलने जा रहे हैं. तो हाउ कैन दिस बी कि आप इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ाना चाहते हो या फिर ये कैसे अलाउ किया जा रहा है. तो इसका no, no, मतलब कोई एक्सेप्ट. and there is a good example. There is Abhishek Haldar from हाँ. Mohammedan Sporting played in one of those matches. He broke his shin. He's out for a whole year. He will not play football in 2024, and is amongst the Indian boys the second highest paid player at Mohammedan Sporting. Just to put a ओ. perspective to this. So this guy has already screwed his next season. Former India junior international, but he was getting 40,000 rupees per game गेम. to play Hmm. Cape. So these are all realities, स्ट्रक्चरल इश्यू. structural issues, huh? But it's also a reality of that those Cape matches, especially the MLA Cup in Canning, there are 30,000 people turning up for those matches, right? Hmm. Which you don't have in the I League or आई ISL. आईएसएल. हाँ. So the question is, how do you connect with the people, right? He recently did something on Kolhapur, but you can't play in Kolhapur. कोल्हापुर. That's another issue, right? There are realities, and the realities of top level professional football and these unofficial leagues. Again, there are foreigners. But Yeah, can't this be into categorized as a semi-professional? this is completely amateur. How is this semi-professional? अच्छा. हाँ. Paisa mil raha hai, but this is outside of your remit. That's the problem. हाँ. It is outside of हाँ your rules and regulations. It's like sevens in exactly. Kerala. I remember हाँ. once, I think it was even Baichung, IM Vijay, and Renedy and all suddenly pushed off to Kerala for a few days and played sevens in front of those bamboo stands. Huge money. So that's no, it's not Sunday League. Even Sunday League has got some Are sort of more structure. professional. हाँ. Hmm. संडे लीग है लिटिल बिट स्ट्रक्चर है. एग्री. आई थिंक वो थोड़ा सा है. आई थिंक इसका मतलब एएफएफ तो ये इसके अगेंस्ट एएफएफ क्यों एक्शन नहीं ले रही कि ये सारी चीजें है और फीफा भी क्यों नहीं ले रहा है. Why would FIFA, why would AFC get involved in India matters? And this is not an AFF matter, that's a Bengal matter.
and this Cape tournament is called MLA Cup. uh, So it's political, no? The IFA will not touch political. it. That's the other side of the problem, no? These are also realities in an Indian context. It's Yep. not so Yep. easy. It's not so easy to you can ban it, but you would then have other problems. And those who are reporting about these things, that I League, even ISL players in the past have played it. Now these channels are banned, or people are banned from going to these tournaments. बट Yeah. एटलीस्ट ये तो करना चाहिए कि जो आपके आई लीग एंड आई लीग थ्री थ्री से मान लीजिए आई लीग 3 2 ISL आई लीग इन ISL ये 4 लीग में तो जो खेले वो एटलीस्ट उनको तो अगर खेलते हैं देन उनको तो यहाँ पे आपको बैन ही कर देना चाहिए AFF तो कर ही सकता है एटलीस्ट हाँ, और AFF को कौन बैन कर देगा तब उसके बाद? अरे AFF No, को कहाँ मन no, की बात I, समझो I, यहाँ पे I can't see. These are Indian realities, na. Ban तो होना ही चाहिए. The player needs to be banned and given such a heavy fine that he will never think again playing these tournaments. But we also and the players are very, very well paid. The players who are playing this. And Niroka, I take Niroka out because Manipur has its own problems at the moment. That's why their team is playing these tournaments. Most probably Niroka is not even paying salaries. Most probably these guys are getting the salaries from there. देर So, which shows you the problem. We've spoken about Hyderabad. If there was Cape competitions in Hyderabad, you would most probably see national team players playing Cape tournaments in Hyderabad. These are also realities. No? So we have to find, the structure in Indian football needs to find solutions to these problems. That for the players, there are players who've decided not to play Kolkata League, rather play Cape because they say, I earn X times more playing Cape than I earn playing CFL. These are all realities. You have to find solution to these realities. And that's something where there is a political side of things, there's the football side of things, and there's the player side of things. And all of this you need to bring together to find a solution. Yep. Well, yeah, guys. Thanks, Arava. Thanks, Hiren. Thanks, everybody, again in the chat for joining today. We did a little bit of a discussion on the Indian team and, of course, a couple of rumors here and there in Indian football. Yeah. 1 सेकंड राहुल अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग तो आप 5 मिनट में पूछ सकते हैं उसका भी आंसर दे Sure. देते हैं देन वी विल रैप हैदराबाद क्लब टू शट डाउन मयंक साखारे भाई अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुआ तो इवेंचुअली दैट विल हैपन I फाइनेंशियल think हेल्प नहीं मिला at the moment, as things stand, the latest Hyderabad will shut down is at the end of the season. I think Hyderabad has a life till the end of the season max. But to some extent, as things stand at the moment, I don't know if they can even play the Super Cup. Because I think a lot of the players are now, even the Indian players are trying to get out of contract. That's the danger because you can't even ask for a transfer fee. A Sana Singh, a Nikhil Pujari, a Mohammad Yasir, a Hitesh Sharma, Sai Tabora, a Mark Zoe, these players could be on the market for free. And they're good quality players. Yes. Online And, Vision Cup, no? ऑनलाइन का अभी तक इंडिया में तो भाई नहीं बताया कि भाई जियो सिनेमा में आएगा कि नहीं आएगा ओनली स्पोर्ट 18 अनाउंसमेंट सो वेट आई थिंक has it been announced? Because in the past, Star यस used to यस have Star has नहीं the AFC rights. नहीं ये अनाउंसमेंट कर दिया है स्पोर्ट 18 वाला Okay, take it. दो Then they've वीक taken पहले over. किया है Then they have, because normally Star Sports has the overall rights in the Indian market for AFC tournaments. they only announced for the you can say कि टीवी ब्रॉडकास्टर स्पोर्ट 18 नॉट OTT का अनाउंसमेंट नहीं किया Pindrop's asking whether conceding defeat even before playing the Asian Cup is justified because he thinks that's what the manager is sort of conveying. What do you guys think? डोंट टेक इट इस स्टेटमेंट इज टू मच सीरियसली आई थिंक बैलेंस तरीके से लीजिए थोड़ा सा हम मान सकते हैं थोड़ा सा क्योंकि ही आल्सो क्वाइट चेंजिंग हिज स्टांस बाय एवरी नेक्स्ट यू कैन से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और व्हेनेवर ही टॉक्स टू मीडिया सो जस्ट लाइक दैट डोंट टेक इट टू मच सीरियसली Yeah, yep. Well, yeah, guys. Any other questions? Please do drop it in the chat.
Hello, people saying Sports 18 has acquired Star Sports. No, that's not the No, case. no, They're still in negotiations that Reliance could try and yeah, to try and buy the Star bouquet from Disney. Yep, yep. प्रियंक भाई बोल रहे हैं कि ओबीसी से वो हैज अ लॉट ऑफ मनी। पे क्यों? वो क्यों करेगा भाई? वो क्यों करेगा? कोई बिजनेसमैन होता है, आपके पास खुद के पास पैसे है तो आप बोलते हो कि भाई मेरे को इस बंदे इसको भी वो करना है। कोई नहीं They've करता भाई। they've done it in the past. They have given बस grants, but under government pressure. Let's put it this way. हाँ। So therefore, that's the thing. And ये cricket सर is just too ये strong. नहीं ये श्रेयस वीर का अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाई Yeah, वी you डोंट know. रिलीज एनी यू कैन से कि स्पेशल किट फॉर दिस एफसी एशियन कप। वी डोंट हैव फंड्स। No, it's not with funds. I think the question is first of all if Performax will launch a new jersey or not. तो कब करेगा? बाकी लोगों की तो आ गई है, हम कब करने वाले हैं? ये भी You वो still have क्या time. बोलते हैं कि वो It's the टेलर के fir- पास है, सिलने it's गई है। the it's the 1st of January. So you know, some teams release their kits 5-7 days before a tournament. So let's wait and see if the AFF does something on this. Yeah, on that, guys, your favorite kids, Indian kids so far? मेरी वो व्हाइट वाली। Acha, okay. Acha. Ah, nice. Okay. I was flexing it. Can we Yeah, expect to and score and against? and and I say you tell you why because I designed it, so therefore I can say I did. Okay. That's my favorite. No jokes apart. We Fair did enough. in 2000 actually, right? India was still wearing blue in those days. Blue was the main color, and the alternative was whatever was available, so to say, with the whoever was making the kit. Huh. And this was an option, and Rahul, we've got a problem. It was Rahul, right? Hiren? यस। Again, the audio problem of the other day. हाँ, Um, so कोई नहीं। something is some connection seems to be loose or something. So this was designed it's very simple actually. No? It's just the India flag and a white, and it's actually India written all over the. You can't even नहीं see it. नहीं, It's written हाँ, all नहीं over दिखता। India likha hua hai. So this was something which was very special made at the time, and बट yeah, व्हाट that's इज दिस that's सिंबल सर? ये सिंबल यहाँ पे जो है वो कौन सा है? कौन वाला symbol. ये जो आपका क्या बोलते हैं, कौन सा लेफ्ट लेफ्ट साइड पे आपका? हाँ, ये वाला। Yeah, ये तो AFF का अच्छा, पुराना वाला logo. पुराना वाला लोगो है। हाँ, अच्छा। So this is one, and there, if you ask me about jerseys and favorites, would be the because that was a successful one was the blue one Nike wala with the one stripe down, which won Nehru Cups and AFC Challenge Cup and all those kind of tournaments. So those would be my sort of favorites. Even though I also like the original jersey that 656 did for the national team. That was also शशांक the भाई good बोल one. रहे कि पैसे चाहिए तो हर एक महीने में पाकिस्तान के साथ मैच खिलाओ। गौतम भाई बोल रहे कि अपार्ट फ्रॉम केरला ब्लास्टर एंड मोहन बगान, रिमेनिंग क्लब्स एवरेज अटेंडेंस इज बिलो 10K, व्हाई कांट क्लब्स लुक्स एट ऑप्शन इन इंक्रीजिंग एवरेज अटेंडेंस? आई थिंक देयर आर मल्टीपल I फैक्टर्स जो I इसमें इफेक्ट I करते हैं। I thought Jamshedpur's was higher, no? Jamshedpur should have been 15-16, no? हाँ, जमशेदपुर का भी 10K के ऊपर ही होगा उसका एवरेज अटेंडेंस। I would have that. Certain clubs don't have. East Bengal also will be, I think, 14-15 average. I think will be the average that East Bengal has. So I think not every club is below 10. And yeah, Rahul, can you hear us? Is it better? Is it better now? Yeah, it's यस better. यस। So from that standpoint, there are multiple clubs, but there are other teams. So the Blasters and Mohun Bagan will surely be the highest. But I think Blasters should be more than 30K, and Mohun Bagan below because 30K at the moment is the number of tickets being allowed at the Salt Lake Stadium. But there are other teams, of course, for different reasons why the fans are not coming. In Mumbai, the stadium is too small, so Mumbai should be about 5,000-6,000 on average.
Rahul will know most probably how much the BFC average at the moment is. Huh? It's about 8, 9, maybe 10, 5 to 6, 5 to 6 5 officially. to 6, 5 to Officially, 6. yeah. So, so that shows you success is a factor. The same applies to Chennai. And I think Chennai, if they are successful, they'll get वीकेंड का more भी into सर the रहता है, listings. वीकेंड भी अफेक्ट करता है कपलों कहीं पे. But the point is that weekend cannot be a factor because the ISL is never bothered about weekends. The ISL is always played through the week. This whole weekday matter should not be an issue because that's the reality of how the league is run. So, yeah, Mohun Bagan cannot at the moment have 45,000 because the government of Bengal is only allowing 30,000 tickets to be printed per game. So that's a reality, right? So that's it. And Mashuk, yes, Indian fan base in Qatar. I think Indian fan base in the Middle East is strong. We saw that against Kuwait the other night in the World Cup qualifiers. My own experience has been, be it in Qatar or be it in the UAE, and during the last two Asian Cups, that India was de facto the second home team in regard to fan support. So especially the UAE match was quite crazy, where over 40,000 people were in the stadium and more than 30,000 were Indians in the stadium. The Al Sadd beat Australia, beat Bahrain, beat even the South Korea match. All of these matches have had more Indian fans than others. So therefore, India has a solid base, and in 2024, it'll be much more organized than it was in 2011 or 2019. I remember in Sharjah, for example, I went to the stadium walked in with IM Vijayan. We had to park our car a little away. The crowds literally mobbed Vijubhai for photos and autographs and other things. So we will have a home tournament. So we'll have 20, 30,000 people supporting us each match. So that's at least a positive that we'll certainly have. Absolutely, absolutely. Hiren, can you expect a formation change, or if with I, Brandon I being I back? think it will be most probably 4-2-3-1 और 4-4-2. I don't see too much changes. I think करना भी नहीं चाहिए. एक जो आपकी सेटल जो आपकी फॉर्मेशन है, क्योंकि एक इंडियन प्लेयर ऐसा भी नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन में हमने देखा है कि इतना ज्यादा कंफर्टेबल भी है. आई थिंक बैक थ्री में उसने ट्राई जरूर किया था. आई थिंक एक आध मैच इसमें, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे को तो लगा कि बैकफायर ही किया है. सो रादर देन एक्सपेरिमेंटिंग, आई थिंक go with the trusted formation and low. I think mid block अगर हम खेलेंगे then it would be good rather than you can say कि playing a little bit higher line or anything. Mm, fair enough. Fair enough. Hiren saying just go with a slightly more defensive approach. Um, Mayank saying back three probably not looking wouldn't suit us. I don't know. You agree? It's a question of how you want to set up that back three, because there are players who've been playing in the back three in their respective clubs. Pritham Kotal and played it last season at his club. Sandesh has played it at his club. Rahul Baker has been part of the back three a number of times now at Mumbai City. So the question is how we're setting ourselves up, and the question is, are we putting an extra man defensively in midfield, or are we putting a man extra in defense? And against Australia, depending on how they come out in numbers, so therefore, yeah, it's he has options. Again, I understand where Hiren comes from. We're saying 4-2-3-1 or 4-4-2, but Igor has tried out a three-man backline in the past. So I don't know if he's going to go defensive. Even a Mumbai City under Des Buckingham went to a five-man backline. And therefore, and a 4-4-2 to me doesn't make sense, because I don't need two strikers. If it's maybe a 4-4-1-1-1, maybe that makes sense. But then I'm back into a 4-2-3-1. Yeah, that will be an interesting test. That makes sense. I think we'll have to Yeah. be defensive in that first game. We'll have to be ready for that physicality from the Aussies. So therefore, he might play around with the system. Okay, we'll wrap up with this. Both of you guys, can we expect a goal? Can you expect to score either against Australia or Uzbekistan? I'm expecting a goal against Uzbekistan. Okay, Arnava.
I'm expecting nothing in those two matches. I'm happy with anything that we can get out of those two games. Let's be honest about it. We are playing two of the best teams in Asia at the continental level, and I would love us to get a result against both teams. But I'm realistic enough to know that avoiding 5-6 nil defeats at the start would be good. But you never know. I would wish for a wonder, but at the moment, looking at the injuries, looking at the tiredness of a number of players, it makes me worried. It makes me really worried. And but again, I still have hope. So therefore, I stay with the hope factor, but I also stay in reality as well. So that's the difficult bit. Okay, fair enough, Arnav. So yeah, that's pretty much it, guys. Again, like I said, thanks everyone in the chat for joining, Arnav and Hiren. Like always, like and share these videos. Subscribe to the channels Sports Kabri, Curious Harry, Arun Foot, and Indian Food and Football. We'll be back with more. Good night, guys. Good night. Good night, everyone, and a happy new year.